Before you sleep, what is your routine? Do you swipe on your phone for like 20, 30 minutes straight? Or do you flip the pages of your textbook? Hi, and welcome to IGNOU Dost. And today we would be talking about study before bed. तो हम जब सोते हैं सोने से पहले एक प्रॉपर रूटीन फॉलो होती है हमारी कि अच्छा हम ये काम इस टाइम खत्म कर देंगे, देन खाना खा लिया एंड देन वी हैव अ लीजर टाइम ऑफ वेर इन हम लोग फोन देख लेते हैं या कमेंट्स कर देते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है. बट व्हाट वी टेंड टू फॉरगेट इज दैट कि हम पढ़ना भूल जाते हैं. हमने बहुत सुना होगा लाइक पीपल गोइंग यू शुड रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड और यू शुड पुट अवे योर डिजिटल devices before going to sleep. It would help calm your mind. Yes, it is true. जब सोने से पहले 20-30 मिनट अगर आप बिना फोन के रहे, it does calm down your mind. आपका माइंड इतना स्टिमुलेटेड नहीं रहता. However, हम लोग जो चीज नहीं करते हैं वो है रिकॉल द होल कंटेंट और द चैप्टर्स दैट वी हैड स्टडीड दोपहर या सुबह को एट नाइट. हमें लगता है कि चलो स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, हम वहां से रख के देन वी कैन हैव अ लीजर टाइम. इसीलिए बोला जाता है स्टडी बिफोर बेड इज इम्पोर्टेंट. Just like sleeping is important for your body, so is studying before bed. And it is a practice that you can uh, uh, take in with a different study patterns. तो हमें बोला जाता है कि 8 घंटे की नींद पूरी करना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, एंड एग्जैक्टली एज इट शुड, बिकॉज एज वी स्लीप आवर बॉडी रेजुविनेट्स. हम जितनी भी टायर्डनेस है, एग्जॉशन है, सब धीरे धीरे जाती है. एंड इफ यू डोंट स्लीप फॉर लाइक इवन लाइक द मिनिमम इज 6 आवर्स, वी शुड स्लीप फॉर 6 आवर्स. अगर उससे कम भी सोते हैं तो आवर बॉडी starts deteriorating in the sense कि हमारे हम बहुत थके हुए महसूस करते हैं, आंखें नहीं खुलती, कभी कभार there's headache, stuff like that. तो ये सब होता रहता है. However, sleeping in the right amount as well as studying before bed is the key for having a good memory and recalling power the next day. अब ये चीज होती कैसे है? तो क्या करा जाता है कि हम जब पढ़ते हैं एक चीज को बेड से सोने से पहले, हमने सुना होगा कि हमारा माइंड कभी सोता नहीं. आवर माइंड डज नॉट स्लीप. इट जस्ट प्रोसेसेस वॉट एवर हैपेंड ऑल डे एंड वो उसे कैटेगरिकली ऑर्गेनाइज करता है. एंड तभी हम सुबह जब उठ रहे थे फ्रेश रहते हैं, हमारी मेमोरी में सब अच्छा रहता है एंड यू आर एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली. आपने देखा होगा कि जो बंदा 6 घंटे 7 घंटे फुल डे पढ़ के पेपर लिखना जाता है विदाउट जस्ट विद स्लीपिंग जस्ट फॉर 1 or 2 hours, वो जब एग्जाम हॉल में बैठता है ना, the person goes like, okay, I'm forgetting something. Okay, I think इसका आंसर ये, I think इसका आंसर ये. The idea of I think I'm forgetting something or this might not be the correct answer, this hesitance, this uncertainty is there because हम सही टाइम पे सोए नहीं और हमने सोने से पहले 20-30 मिनट रिकॉल नहीं करा क्या पढ़ा. ऑन दी अदर हैंड, एक बंदा जो लाइक जिसने 8 बजे रात को बंद कर दिया सब एंड 10:30 बजे सोने से पहले दैट person reads the book, reads the flashcards, reads the notes for like 20 minutes, आराम से सोता है, 8 घंटे की नींद पूरी करता है and then gets up early in the morning to recall it once again, has much more retention power. And जब वो पेपर में जाएगा, that person would easily be able to answer all the questions properly. This is the concept of study before bed. According to a 2016 study published in Psychological Science, people who studied before bed, then slept, then did a quick review the next morning, not only spent less time studying, they also increased their long term retention by 50%. As I said, when we are studying before sleeping, our mind is able to categorize all the information, and then हम जब सुबह उसे एक बार पढ़ते हैं हम उसे इजिली रिव्यू कर पाते हैं. हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, ये बुक खोलो, वो बुक खोलो, ये नोट खोलो. हमें बस जो हमारे सामने है हमने अच्छे से पढ़ा एंड देन वी कैन गो अहेड. As the study says that not only we decrease the studying time but we also enhance our retention power by 50%. अब इसके बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट पुशेस यू इनटू हेल्दी लाइफस्टाइल, बिकॉज हमें बोला एज हमारी मेनी पीपल से, इवन रिसर्चर्स से, इवन स्टडीज टेल कि यूज calming your mind before sleeping makes you feel much more refreshed. अगर आपने देखा होगा कि आप एक बहुत मूवी देख के जब सोने जाते हैं तो जो मूवी के सीन्स आपके दिमाग में बैठे रहते हैं ना, आप बोलते रहते हो यार मेरे सपने में ना ये वाला एक्टर आया था, मेरे सपने में वो वाली एक्ट्रेस आई थी. Similarly, when we study before sleeping, all the information it is there in our mind subconsciously, and when we get up, we are able to locate.
the information with the correct chapter or topic. तो association काफी अच्छा बन जाता है when after we get up and like study before sleeping. Second, it enhances your concentration, कि आप concentrate अच्छे से कर पाते हैं because your mind is fresh. आप जब पेपर देख पाते हैं, your memory is able to correlate with the correct information and you can concentrate on that. आपको ये नहीं होगा अच्छा कल रात को ये भी हुआ था वो भी हुआ था. Your mind is fresh and clear. Third is that कि when you study before exam and when you like get up and after like study for like 20 minutes again, पढ़ने का time कम हो जाता है. Like what we tend to do, that we sit and open the book पूरा chapter and go like फस क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना. Rather than that you should just write down the notes. पहले पढ़ो, सोने से पहले, सोने के बाद पढ़ो, sorry उठने के बाद पढ़ो, and it will reduce the time drastically, and in that time you can like sit आराम से concentrate on whatever you have to do and all that. So this also reduces the studying time as well. So in this manner, if you, I'm not saying that this is the only manner in which you can get good marks. All I'm saying is that if you incorporate this with the study pattern, be it your uh, uh, retention method or space learning method or retrieval method, any method, if you keep it, if you incorporate with that, the result would be much more uh, रिजल्ट बहुत ज्यादा बेटर होंगे. आपको जो रिजल्ट चाहिए वो जरूर मिलेंगे बिकॉज योर बॉडी इज ऑल्सो अकोमोडेटेड, इज हैबिचुअल टू दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल और दैट काइंड ऑफ स्टडी पैटर्न. सो थोड़ा पुश करिए अपने आप को थोड़ा और. सोने से पहले डिजिटल गैजेट्स को साइड रख के अगर आप ये पढ़ेंगे, आप प्लेजेंट भी होंगे सुबह सुबह, आपका रिकॉलिंग भी अच्छा होगा. एंड आप जो भी अभी कोर्स में यूजी में हो पीजी में हो, आपको कोर्सेज पढ़ने में, आंसर्स देने में एक और रिफ्रेशिंग फीलिंग मिलेगी. तो अगर आपको और ऐसा लगता है कि मुझे अभी क्लियर नहीं है या मुझे थोड़ी और हेल्प चाहिए अपार्ट फ्रॉम लाइक studying before bed or other methods, you can also contact on this number 75949 39297 and get help. If you we have different courses, like we have live recorded classes, value added notes, एग्जामपीडिया, असाइनमेंट्स है, मेंटरशिप है, मेंटरशिप करियर डेवलपमेंट, स्किलिंग, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट. आपको लग रहा है कि आपने कोर्स ले लिया बट आप क्लैरिटी नहीं है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड वी हैव ऑल दिस फॉर यू ओनली. कि आपको हेल्प चाहिए तो वी आर देयर. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर एंड लाइक द वीडियो. एंड अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इससे और इम्प्रूवमेंट हो रही है, डू टेल अस, इट वुड बी अ प्लेजर टू हियर फ्रॉम यू. Otherwise, if you have any comments or queries, please put it down in the comment section below. Thank you so much.